Hello, friends. Welcome back again on the Consistency in Silence YouTube channel. So, in today's class, we will be going to discuss the new heading that is atmosphere. In today's class, we will be discussing only the general parts of the topic atmosphere. In the next lecture, we will start some technical discussions like the structure or the classification of atmospheric layers. So, without any further ado, let's start today's session. So, first of all, what is atmosphere? It is the envelope of gases that is surrounding whole of the earth. This envelope of gases is attached to the earth's crust by the earth's gravitational field. एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मेरे से भी किसी ने पूछा था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वी ऑल नो दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सेस. टिल्टेड एक्सेस है, उस पर अर्थ रोटेट हो रहा है. सो डज एटमॉस्फेयर ऑल्सो रोटेट्स विद द अर्थ? थोड़ा सोचिए इस बारे में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. इसका जवाब नहीं दूंगा, क्यूरियोसिटी में आप मरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है. और वैसे इसका बहुत आसान जवाब है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर? इट इज़ द एनवलप ऑफ air or gases, envelope of gases that has surrounded all of the earth's crust, and it is attached to the earth via the gravitational force of earth. What are the constituents? अभी तो बोला there are gases, but we will divide it. So these are the basic components of the atmosphere. Chronological order of the gases: nitrogen, oxygen, argon, CO2. Then इसके आगे हमको याद करने की ज़रूरत है नहीं. So let us dwell into particular topics. थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे हम. नाइट्रोजन. What is the function of nitrogen? पहले तो कितना है ये? 78% constitutes 78% of the atmosphere. Then what are the functions? Controls rate of combustion. If the Earth's atmosphere has been made up of 90% of oxygen, so imagine a thing or a instance where you have to light a candle, then the whole earth will blast. So tabhi there is a significance of 78% of nitrogen as a constituent of our atmosphere, because the nitrogen is inert in nature, hence it plays a significant role in controlling the rate of the combustion. That's why if you burn a tilli, the flame will not get out of control. क्यों? क्योंकि चारों दिशाओं में नाइट्रोजन है, सो ये कंट्रोल्ड कंबशन है. Also nitrogen forms important part of amino acids which will be taken up by the plants for the photosynthesis process. Second is the most loving gas, oxygen. It constitutes 21% of our atmosphere. O2 का फंक्शन सबको पता है, for the respiration or the sustenance of life. But recall one thing, the first life that appeared on the earth's crust was doing the anaerobic respiration. It means at that period of time we have studied it in the formation of atmosphere topic, है ना. जो सेकेंड फर्स्ट फेज था, उसके बाद सेकेंड फेज आया डी गैसिंग का, उसके बाद थर्ड फेज जो भी का एटमॉस्फेयर है. सो लाइफ इवॉल्व इन द ओशियंस. दिस लाइफ वाज डूइंग एन एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज देयर इज अ paucity, scarcity of oxygen.
By doing the anaerobic respiration, this living thing will do photosynthesis and hence taking up carbon dioxide and releasing oxygen into the atmosphere. Thus, after a particular period of time, there's an abundance of oxygen in the oceans. Now the oceans start emitting the oxygen in the atmosphere, and thus the atmosphere also get rich in the oxygen. तो ये मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी इन द फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फियर. आर्गन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसका रोल नहीं है ज़्यादा कहीं. दिस इज़ येट अगेन इम्पॉर्टेंट, जो हम नहीं समझते इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज. वट आर द अदर इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज? लाइक methane, then carbon dioxide. Water vapor is itself a greenhouse gas. Black carbon, then fluorinated compounds like CFCs, तो वो सब है, and the O3. एक और है अभी याद आ गई, नाइट्रस ऑक्साइड. ध्यान रखिए, इट इज़ नॉट नॉक्स, इट इज़ नॉट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड. सो दीज आर मेन ग्रीन हाउस gases that are present in our atmosphere. Greenhouse gases helps in trapping the solar radiation that will heat or balance the heat budget of the earth. If in a world in which earth don't have the presence of these GHGs, the earth will freeze to minus 15 degrees Celsius. Thus the component of CO2 is very much small in our atmosphere, but it have a relevance in functioning the heat budget of the earth. But due to climate change and some anthropogenic activities, now its concentration is increased. This was regarding our gases part. Now we will jump to the water vapor. वाटर वेपर का सबको सारी चीज़ें पता ही है, बट इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं तो वो हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ GHG. आई हैव टोल्ड यू 50% of the water vapor is within the 2 kilometer altitude of the atmosphere. Water vapor will help via two ways. First, condensation. उससे क्या बनता है? Mist, frost, clouds. So these are the formation of the condensation of the water vapor. But there is yet another function of water vapor. What is it? The precipitation part. Formally I have told you the condensation. Now I am telling you about the precipitation. Precipitation in the form of sleet, snow, rainfall. Understood? So these are the two functions of water vapor. The first of all, it is a GHG. The second of all, the condensation as well as precipitation part. Now let us dwell into the variation in water vapor on the earth. So we will dwell into the different heads like latitudinal change, altitudinal change, seasonal change, and the last is diurnal. In the latitude part, it is seen that the water vapor will decrease if one moves from the equator towards the pole. It means maximum water vapor will be found out between the tropics. If we move away from the tropics or equator towards the pole have the least amount of water vapor. So this is the latitudinal change. But
there is a anomaly or exception in this. The least amount of water vapor will be found out in the tropics itself, where on the western edges of the continents. Now what is this specialty of western edges of the continent in the tropics? Because there's a presence of deserts. If अब तो टाइम लग जाएगा, बट इफ आई ड्रॉ वर्ल्ड मैप तो आप देखिए most famous deserts, most driest deserts will fall between the tropics as well as on the western margin of the continents. Like here we have the Sahara desert, तो वो सबसे बड़ा है. Then we have here the नामीब desert, वो एक desert हो गया हमारे पास. ऑस्ट्रेलिया तो पूरा ज़्यादातर डेजर्ट से ही भरा पड़ा है. एक हमारे पास साउथ अमेरिका में डेजर्ट है, आप बता सकते हैं, चिली और अर्जेंटीना पे. मैं थोड़ा सा उसका नाम बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ तो वेस्ट साइड में तो हमारे पास आ जाएगा पैटागोनिया, सॉरी ईस्ट साइड में तो आ जाएगा पैटागोनिया, वेस्ट साइड पे एक प्लाटू आ जाएगा अल्टीप्लानो प्लाटू. बोल रहा हूँ बहुत फेमस डेजर्ट है और वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट है. ठीक है, आप देख लेना उसको जाके. तो हमारे पास वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे बहुत सारे डेजर्ट्स मिलते हैं एंड दीज आर द रीजन्स वेयर वी विल फाइंड द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. दस इट इज़ एन एनोमली in the general rule that I have told you about the latitudes, that the amount of water vapor will decrease when one moves from the equator towards the pole, but the least amount of water vapor will be found out on the western margins of the continents between the tropics. Altitudinal change, I have told you that 50% of the water vapor will fall in the vicinity of 2 kilometer in the atmosphere. The seasons, if we take the Indian seasons, in the summer season we have abundance of insolation, solar radiance. तो उससे क्या होगा? Yes, evaporation. And evaporation से क्या होगा? The amount of water vapor in the atmosphere gets increased. Hence summer are humid in nature. Whereas if we talk about the winter seasons, in the winter seasons there is no solar irradiance. नो बोलना कुछ एक्सट्रीम हो जाएगा, हम बोलेंगे लेस सोलर इन इरेडियंस और लेस इंसोलेशन. हेंस द इवापोरेशन प्रोसेस विल स्लो डाउन एंड हेंस द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर विल गेट डिक्रीज्ड. हेंस वी हैव द ड्राई विंटर्स. बट all this discussion I am doing in the context of India because at some other regions there is a winter rainfall. Diurnal, it means in a day, in a 24-hour span, at what part of the day we will witness the highest amount of water vapor. Highest amount of water vapor कब witness होगा? When we have solar radiance, मतलब between क्या बोले, मान लें 12 to 3 in the noon, because the insolation is perpendicular in the tropics region, so hence there is a abundance of sunlight and abundance of evaporation, thus abundance of water vapor molecules in the atmosphere. डायरनल रेंज में एक तो ये हो गया हाईएस्ट, बट लोवेस्ट डायरनल, डाई मतलब 2, तो ये हाईएस्ट हो गया, तो लोवेस्ट क्या होगा? यस, जो सुबह सुबह होता है हमारे पास, क्या होता है सुबह? डॉन होता है, डस्क होता है? डॉन होता है वो, शायद से देख लेना. तो वो कौन सा टाइम पीरियड है? 3 to 5. So this is the time where we will find the lowest value of water vapor in the atmosphere. So we have covered all these 4 parts. Now jumping to the particulate matter. These are very fine dust particles that are suspended in the air. Like aerosols are one of the examples of particulate matter itself. Others are volatile organic compounds, VOCs,
बेसिकली जब आपके घर में पेंट लगता है, सो देयर इज़ अ pungent smell that you can smell for 3 to 4 days. So that is nothing but the release of VOC in the atmosphere. So they are quite harmful for the human bodies. So such particulate matters will inhibit the processes of our respiration. They will create burns on our in our eyes. Like if you go in Delhi after the vacation of Diwali, सो आपकी दिवाली बहुत अच्छे से मनने वाली है, आपका शरीर बहुत इन्जॉय करने वाला है, अंडरस्टूड, आपके लंग्स बहुत इन्जॉय करेंगे. सो एक हम उसी का सब टाइप डिस्कस करेंगे, एरोजोल्स. नो व्हाट आर दिस एरोजोल्स? एरोजोल्स आर वेरी मच रेलेवेंट बिकॉज दे एड इन द क्लाउड फॉर्मेशन. Clouds are formed by collision and coalescence process. In that particular process, the aerosols that are suspended in the atmosphere will work as the hygroscopic nuclei. These hygroscopic nuclei will attract the water vapor molecules and attach them to their surface. So अगर these are aerosols particle, water vapor आया ऊपर, they will attract their hygroscopic nuclei. They will attract water vapor and attach them on their surface, and hence there is a process of collision and coalescence. By the process of collision and coalescence, we have the formation of clouds. These will eventually develop into the clouds. But what will happen if the anthropogenic emission of the aerosols will exceed a particular limit? So now there are ample amount of aerosols in the air. Again, they will perform their natural functions of attracting the water vapor molecules. But now, as there are numerous aerosol particles present in the atmosphere, hence each aerosol will try to attract water vapor on their surfaces. But water vapor quantity is fixed, and the quantity of aerosols particle have been increased. It means very less amount of water vapor will get attracted to each aerosol. तो दिक्कत क्या है? सही है, इसमें इतने सारे क्लाउड बनेंगे. I have told you the water vapor quantity is fixed. It means less and less amount of water will get attached to all these aerosols. This small amount of water will get easily evaporated by the incoming solar radiation. In these, there is a continuous process of collision and coalescence. It means the layers of cloud will be formed before the sun is able to evaporate these clouds. But now there is no collision coalescence process on a higher level. Only one layer can be formed, and hence sun has the capacity to evaporate these small collision and coalescence droplets. Thus, there is a reduction in the formation of clouds and reduction in the annual rainfall. So this is one of the aspect. Another aspect is we have the global dimming process. As the word suggests, global, it means all over the earth. Dimming, it means there is a reduction in the incoming light, incoming solar radiance. These aerosols are present in the atmosphere in such an amount that they will absorb the incoming solar radiation. Thus, the insolation will never reach the earth's crust. और उससे क्या होगा? Yes, our biological clock will get distorted. There is a phytopollution. These aerosols will eventually settle on the leaves of the plants, and thus they will inhibit the solar radiation that are reaching to plants for the photosynthesis. Hence, there is a nix
Nix मतलब prevent, they prevent the occurrence of photosynthesis also. So this is known as phytopollution. So these are number of negativities that can be imparted if there is an anthropogenic increase in the emission of aerosols. Yet again another topic, not topic but इसी से थोड़ा मिलता जुलता है, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं. What are the effects of global warming? अगर ऐसा कुछ सवाल मेन से पूछ लिया तो क्या इफेक्ट बताओगे आप? जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है, क्या आती है वो? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, यही आता है हमारे सबसे पहले दिमाग में. पर इससे होगा क्या क्या बताइए. देयर इज अ राइज इन सी लेवल. एग्जाम्पल अगर आपको देना तो थ्वाइट्स ग्लेशियर कहाँ का है? एंटार्क्टिका का है. बहुत जल्दी पिघल रहा है. देयर इज अ राइज इन सी लेवल. रिड्यूस्ड, क्या था, कौन सी टर्म थी इसमें जो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है? एल्बिडो. Reduced albedo, thus forming a positive loop. Now there is more and more global warming happening. Increase in extreme events like forest fires. Triple dip La Nina was recently in news. Forest fires, prolonged droughts, variation in monsoonal rains, increase in dry days in monsoon. So such kind of devastating effects can be caused by the global warming and climate change. The productivity of agriculture will decreased. The productivity of agriculture is decreased. Increased risk of global disease like that of COVID. So these disease will increase. Why they will increase? Suppose there is a dormant virus or bacteria that is lying in the glaciers. कैसे है? Solidified है glaciers में और वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा है. But now as there is global warming and there is a melting of glaciers, now this bacteria or virus will get free and then eventually there is a spread of global disease. अब आपको ऐसे नहीं लिखना ये वाला आंसर. अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप न्यूमरस फील्ड्स में लिखोगे. लाइक अगर बोल दिया आपको व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, सो आप ऐसे लिखोगे रीजन वाइज 1.1 Antarctica, tropics, temperate regions. Then you will write ओशन पे क्या क्या होने वाला है, लैंड में क्या क्या होने वाला है, एटमॉस्फेयर में क्या क्या होने वाला है. एंटार्क्टिका में मैंने बताया मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, तो उससे क्या होगा? राइज इन सी लेवल. उससे क्या होगा? कोस्टल फ्लडिंग. तो ये सारी चीज़ें हो जा सकती हैं. ट्रॉपिक्स में क्या होगा? वही जो कोस्टल फ्लडिंग मैंने बोला वो इधर होगी. देन द वल्नरेबल आइलैंड नेशंस विल गेट सबमर्ज्ड अंडर वाटर. ट्रॉपिक्स में ये सब हो जाएगा. टेम्परेट में क्या क्या होगा? यस, ड्रॉट कंडीशंस लाइक वी हैव सीन इन यूके, यूरोप में जो अभी हमको देखने को मिला है. देन हीट डोम इफेक्ट्स विल गेट इंक्रीज्ड. ओशन में यस, कोरल ब्लीचिंग, द फूड चेन ऑफ ओशन
gets destroyed. Increase in carbonate compensation debt. It means now more inhabitable regions will be there under oceans. Tolerance of the aquatic animals are very low, hence mass extinction also. लैंड पे एग्रीकल्चर का लिखिए, प्रोडक्टिविटी विल गेट डिक्रीज्ड, पेस्ट विल इंक्रीज. एटमॉस्फेयर में यस देर इज मोर GHG, हेंस मोर पोल्यूशन, मोर रेस्पिरेटरी डिसीजेज, कैंसर लाइक डिसीजेज. तो आप ऐसे से इसको यहाँ बना सकते हैं. इसके आगे भी अब आप और लिख सकते हैं. आपने ये दो तो अच्छे से लिख दिए. नाउ यू विल राइट अगेन दिस पॉइंट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आप यहाँ लिख सकते हैं. देन स्टेक होल्डर अप्रोच भी आप यहाँ इसके आगे अपना सकते हैं कि हमारे गवर्नमेंट को क्या क्या दिक्कतें आएंगी, हमारे पीपल को क्या क्या दिक्कतें आएंगी. तो आप ऐसे भी अप्रोच इसमें अपना सकते हैं. So this was all regarding the introduction of atmosphere. In the next section, we will go into the technicalities of the classification of the atmosphere. So till then, if your concepts are getting cleared, please like this video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए goodbye, जय हिंद.